To what extent did the role of the moderates prepare a base for the wider freedom movement? Comment. क्लास आप सब लोग जान लो, नॉर्मली मॉडरेट से 2 ही क्वेश्चन आएगा यूपीएससी में, 2 ही आता ही है मीन्स में, एक हमेशा उनके फेल्योर और एक हमेशा उनका सिग्निफिकेंस, और कुछ आ ही नहीं सकता मॉडरेट से, यही दोनों क्वेश्चन आएंगे। 2-3 साल 4 साल पहले जाओगे आप तो यू विल फाइंड अ क्वेश्चन ऑन द फेल्योर। अभी क्वेश्चन क्या, बेसिकली सिग्निफिकेंस। तो जब टीचर पढ़ाते हैं तो टीचर टॉपिक पढ़ाते हैं, मैं पढ़ाया हूँ आपको, ठीक है, जिन बच्चों ने पढ़ा होगा मुझसे उनको पता होगा, तो मैं टॉपिक पढ़ाता हूँ। क्वेश्चन कोई भी तरह का शेप ले सकता है, दैट्स व्हाई आई ऑलवेज एम्फसाइज कि आप टेक्स्ट बुक भी पढ़ा करो। टेक्स्ट बुक विल गिव यू द इनसाइट हाउ टू राइट आंसर। अब टू व्हाट एक्सटेंट डिड द रोल ऑफ द मॉडरेट्स प्रिपेयर अ बेस फॉर द वाइडर फ्रीडम मूवमेंट, इट इज आस्किंग फ्रॉम यू कि क्या रोल है मॉडरेट्स का। तो हम 1 लाइन में इंट्रोडक्शन लिख करके जल्दी से बॉडी पे जा सकते हैं, एंड वी कैन सिंपली राइट द मॉडरेट्स वर द फर्स्ट जनरेशन ऑफ नेशनलिस्ट हु सर्टेनली और हु डिड प्रिपेयर अ बेस फॉर द फ्रीडम मूवमेंट। फिर सेकेंड लाइन से पूरा जो कंटेंट है आंसर का वो लिखेंगे आप, दैट मॉडरेट लीडर्स थ्रू देयर पेनस्टेकिंग राइटिंग्स they had exposed the British rule in front of the general public। जो भी आप या हम टीचर्स भी पढ़ते हैं इकोनॉमिक इश्यूज ऑफ द ब्रिटिश और हाउ ब्रिटिश हैड प्लंडर्ड इंडिया, जैसे अभी आपने देखा होगा शशि थरूर को भी एक बुक लिखे है एन एरा ऑफ डार्कनेस, ठीक है, 3-4 साल पहले मुझे लगता है, हाँ 4 साल पहले। तो आप एन एरा ऑफ डार्कनेस, तो शशि थरूर के पास जो भी टैलेंट है उन्होंने बुक लिखी, बट ओरिजिनली इट वर द मॉडरेट्स हु हैड एक्सपोज द ब्रिटिश रूल, बिकॉज मॉडरेट लीडर्स लाइक से दादा भाई नौरोजी, he wrote a book called as Poverty and Un-British Rule in India, Poverty and Un-British Rule in India। Then you'll find, you can say M.G. Ranade, Mahadev Govind Ranade. He wrote several articles which are compiled together under a title called as Essays on Colonialism. Then a brilliant ICS officer, Indian Civil Service officer, R.C. Dutt, Ramesh Chandra Dutt, R.C. Dutt, he wrote The Economic History of India। ये मैंने सबको पढ़ाया है, सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे क्लास नोट्स में, ठीक है। Economic History of India, he was ICS and was from a landlord family, and he led threadbare the British land revenue policies along with G.V. Joshi. G.V. Joshi was also a great leader, economic thinker, who had, these two people particularly focused on revenue policy, that how British had looted and plundered our country and how the revenue policy had been quite exploitative। So हमें कौन बता रहा है? हमें यही लीडर्स तो बताए हैं, ये मॉडरेट्स ही बताए, सारे मॉडरेट्स हैं। So they had not confined their activities only in the economic domain। फिर आप इसमें elaborate कर सकते हैं that the moderate leaders had also highlighted that how India under the British rule had been converted from what you can say manufacturer of goods to a supplier of raw material। All of you know India had made its name in the world market regarding manufacturing activities, and in 1757 or by mid 18th century India contributed 1/4 of the world manufacturing sector, 1/4 was from India itself। But if you see 1947 only 4%, from 25 to barely 4% it had been। So these things had been highlighted by the British, highlighted by the moderates, that moderates had been saying also that in India, Indian goods were subjected to high custom duty in England, whereas English goods while entering into India did not have to pay custom duty। Apart from this, the moderates also highlighted that civil services had been an elite service, and they demanded that more and more Indians should be inducted into the civil services। Reason is simple, आप लिख सकते हो उसमें, why they were demanding, because it will help in reducing drain of wealth।
ड्रेन ऑफ वेल्थ। भाई उनकी सैलरी ज़्यादा थी, ICS बहुत स्टीम्ड सर्विस थे, बहुत हाई सैलरी मिलती थी उनको, तो उनकी सैलरी ज़्यादा थी। एंड वॉट एवर द सैलरी दे हैड बीन रिसीविंग, दे विल बी सेंडिंग अ पार्ट ऑफ रिमिटेंसेज बैक टू लंडन, और रिटायर होंगे तो पेंशन वहीं से, ठीक है। एंड इफ इंडियंस विल बी इन द जॉब इन टू द सिविल सर्विसेज, देन वॉट विल हैपन, पैसा यहीं रहेगा, द मनी विल बी हियर एंड एडमिनिस्ट्रेशन विल बी मोर रेस्पॉन्सिव। So when in 1877 age was reduced to 19, maximum age for the civil services was reduced to 19 years in the year 1877. Then in fine, Surendranath Banerjee, another moderate leader, then SN Banerjee, Surendranath Banerjee demanded increase of age. तो इनका एक ऑर्गेनाइजेशन था इंडियन एसोसिएशन, और धरने बैठ गए, इंक्रीज द एज। और इंडियंस क्या करने लगे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी का नाम ही बदल करके लिख दिए सरेंडर नॉट बनर्जी, ठीक है। लगे रहो मुन्ना भाई, ठीक है, डिमांड करते रहो, कीप इट अप। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है बनर्जी का, और बनर्जी का रोल भी है इसमें, ठीक है, मॉडरेट लीडर है। सो दिस वे मॉडरेट्स वर नॉट ओनली कन्फाइनिंग देयर एक्टिविटीज to the economic role, they had also demanded in the field of administration by demanding more Indians into the top job. A reduction in defense expenditure, defense में हमारा पैसा हमारा पैसा government had been using for fighting war. Now government is fighting war, let it be in Iran. हमको क्या फायदा है, what is the use of it? तो हम लोग कहे कि भाई हमें तो हमारी तो कोई दुश्मनी है नहीं, तो हमारा पैसा हमारे यहाँ यूज हो। प्लस आर्मी में उन्होंने डिमांड किया इंडियंस टू बी इन द टॉप जॉब। अपार्ट फ्रॉम दैट, in the legislature, central legislative council as well as provincial legislative assembly, they demanded 50% seats for the elected representation coming from India. Is it okay? Gokhale even criticized the budgetary speeches or budget of the British government of India. In the speeches he had criticized the government budget, because government budget was spending a lot of more than 50% of its income on defense only. तो ये सब सारी बातें जो बाद में चल के एक्सट्रीमिस्ट पढ़ेंगे, एक्सट्रीमिस्ट जानेंगे, रोल तो मॉडरेट्स का ही है। एंड नॉट ओनली दैट, दे हैड गॉन टू द एक्सटेंट ऑफ इवन डिमांडिंग स्वराज, जैसा कि आप कह सकते हो एविडेंट है कब 1906 के सेशन में, जो दादा भाई नौरोजी प्रेसिडेंट हैं कलकत्ता, ठीक है। तो दे हैड बीन नॉट कन्फाइनिंग ओनली टू दीज थिंग्स, दे हैड डिमांडेड इवन सेल्फ गवर्नमेंट, स्वराज। तो कंक्लूजन में आप लिख सकते हो, यस, मॉडरेट्स सर्टेनली प्लेड अ क्रूशियल रोल। दे माइट हैड नॉट बीन, you can say their demands might not have accepted by the British government, but by exposing the British rule to the extremists, the next step is a logical step that led to the beginning of a new era of militant nationalism or extremism.